Vishnuve Namaha. Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter 4, that is selfless karma, verse number 08. Lord Krishna says that paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So paritranaya sadhunam, to protect the righteous persons, vinashaya cha dushkritam, and to annihilate the wicked, dharma sansthapanarthaya, for re-establishment of religion, eternal religion, dharma sanstapna arthaya, sambhavami, I appear, yuge yuge, that is age after age I appear. So literal meaning of this is for the protection of pious person, for the destruction of evildoers, and for establishing virtue, I manifest myself in every age. So Lord Krishna here is stating that he descends in this world to annihilate the wicked, to protect the pious, and to establish dharma. However, if we closely look at this verse, so some doubts arises in our mind that why Lord Krishna himself is manifesting, why God is not sending their saints and those pious souls to earth, so that the dharma is established, they can also do this work of God. So here this doubt arises. There is no need to take an avatar for this purpose, and God can, as God is seated in everybody's heart, so God can manifest it by exploring in our bodies also. Why God is taking birth for this reason. Now, and here it is also described that to establish dharma, dharma is eternally described in Vedas. God can re-establish through a saint. He does not need to descend himself. Then what may be the reason? So if we go little deeper in this verse, then we can see that God strengthens this devotion of us in them by taking avatar. When God himself appears, then in the shape, the forms, the pastimes done by God, the leela done by God, we are being more affectionate and more comfortable. Without formless, because formless God is very difficult to get devoted or to give us refuse. So for our refuse, we feel difficult to surrender in front of formless God. So God comes here in some forms, take avatar and do pastimes, leelas, and other many such things that their devotees love to see, to explain, to discuss. This provides the soul with an easy basis of devotion. Since the mind needs a form to focus upon and to connect with, the formless aspect of God is very difficult to worship. On the other hand, devotion to the personal form is easy for the people to comprehend. Hence, God does it time to time. Now, since the descension of God is 5,000 years ago, many of us has discussed the pastimes and leelas of Lord Krishna and have pioused ourselves. 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था,
तब से उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए कितने ही उनके भक्त अपने को शुद्ध कर चुके हैं और इस ओर बढ़ रहे हैं. Similarly, the Ramayana has provided the souls with a popular basis for devotion. So, Ramayana, in the similar manner, we also discuss the gun dharma of Ram. रहत इन प्रभुचित चूक किए की करति सुरत सैबार हिए की. So our God is such that to say that you are the best is to say least about you. So our God is such, when we see them practically as manifested, then we make many poetries for him. Still it is countless. The pastime of Lord Ram held such fascination among the people that they are crazy, they are devoting, they become refugee, they surrender at the feet of God. Similar is the case with Lord Krishna also. So it is easier for basic devotees, the initial devotees, to surrender by seeing their pastimes. And the dissension also has other purpose, like the stone aged Rishi Gautam's wife Ahilya has been released from the body of stone by Lord Krishna, when practically Lord Ram has descends to. So when Lord Ram descends on हेलो कुमार, बोलते नहीं हो अब क्या? आ नहीं ना तुम्हारा? हमारा तो चल रहा है, आपका बीच में फोन आ गया. अरे हम देख रहे, मिल ही नहीं रहा. अब मुझे रोकना पड़ा प्रवचन. हाँ. So to establish dharma and to establish the dharma of devotion, by so we can easily devote ourselves. Now, next verse is जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना. जन्म कर्म चमे दिव्यम, that means my birth and activities are divine. My birth is also divine. It is free from birth and rebirth. It is free from reincarnation. So the descension of God is free from reincarnation. It is divine. Janma karma chame divyam yo veti tattvata, and who knows this in truth. त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति मामेति सोर्जुना. That tyaktva, in truth, having abandoned deham, punah janma na iti mameti, when I leave this body, at that time I do not take rebirth. So who knows it with very basic, so ultimately attains to me. So Arjun, this is the truth. Let us go for its literal meaning. He who thus knows truly the divine birth and action of mind does not get rebirth. The person, my devotee who knows that Lord Krishna is an avatar and not the common as a human being. So that person who knows it truly and at its very, very basic ultimately attains to me.
So understand this verse in the light of the previous one. Our mind gets cleansed by engaging it in devotional remembrance of God. So how we clean our mind? We remember God, their past times, and in this way our mind is getting cleansed and our soul becomes purged. So this devotion can either be towards the formless aspect of God or towards the personal form. That may be to formless also, and it may be to personal God who is इन फॉर्म. साकार के प्रति भी हम अपनी भक्ति कर सकते हैं और निराकार के प्रति भी हम अपनी साधना कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो साकार रूप में अधिक सुलभ हो जाती है. सो फॉर डिवोटीज who are at lower rungs, it is easier for them to surrender, to refuge to God of some forms, some pastimes. So, devotion towards the formless is intangible and nebulous to most people. They find nothing to focus upon or feel connected while doing such devotional meditations. Devotion to the personal form of God is tangible. If God is in some form, personal form, then it is very easy and simple. Such devotion requires divine sentiments towards the personality of God. We link ourselves with sentiments to God when God is in personal form. For people to engage in devotion to Sri Krishna, they must develop divine feelings towards name, form, virtues, pastimes, abode, and associates. So, if we know something about him, the details that God has recently appeared for us, so it is easier for us to devote for them. If a person devotes even to the stone, then also the person can pious refine the soul by doing so. So form is easier for us to devote ourselves, because energy cannot be as such be appreciated. So though the God is manifested everywhere in the form of material world and energy, but for us, for the basic devotees, it is easy for them to comprehend if the God is in some form. The verse is 4.10. वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता. वीतराग भय क्रोधा. So the person who is freed from attachment, bhai, fear, rag means attachment, with, free from. So the person who is free from attachment, rag, bhai means fear, and krodha, that means anger. So the person who is free from attachment, fear, and anger, manmaya, and ultimately has surrendered to me, only thinking about me. So the manmaya completely absorbed in me, mam upashrita, that is taking refuge. Mam plus upashrita, taking upashrita, refuge to me. Bahuvo jnana tapsa, many persons, jnana tapsa, puta, that means flame, scorching light of knowledge, has pious himself. Jnana tapsa, pious his knowledge. So many with the fire of knowledge has pierced their knowledge. Madbhavam agata, ultimately attains me. Let us see the literal meaning of this. Many who were devoid of attachment, that means जो राग से, सांसारिक आसक्तियों से जो मुक्त हो चुके हैं. Many who were devoid of attachment, fear and anger, who were absorbed in me, and who had taken refuge in me, and were purified by the austerity of knowledge, have attained my state. They have attained my state.
In the previous verse, Lord Krishna explained that those who truly know the divine nature of birth and pastimes, those who truly knows that God is not taking birth after birth, so God is not getting reincarnated. Those who know it truly ultimately attains to God. Here, Lord Krishna is saying, he now confirms that the legions of human being in all ages become God realized by this means, by knowing this. They achieved this goal by purifying their minds through devotion. Now, here Sri Aurobindo also says to make the God to descend in your heart, just purify the temple of your heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So we can purify our heart and God will descend ultimately in our heart. Now, how does the mind get purified? So, this is first we have to liberate us from attachment. That means though this maya, this energy, it is, ये जो माया है ये भगवान की चेरी है, और यदि हम भगवान को समर्पित नहीं होते हैं तो भी हम इस माया की ओर आकर्षित होते हैं, और ये अगर इसकी ओर भी आसक्त हुए तो भी हमारा भगवान के प्रति ही ये आकर्षण जाता है, क्योंकि ये माया भगवान की है, ये ऊर्जा स्वरूप है, और इसके अधीन होने पर हम इसमें राग उत्पन्न करते हैं, हमारी इसमें आसक्ति हो जाती है, और उसको पाने के लिए हम अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, या हम किसी तरीके से अपनी इंद्रियों के दास हो जाते हैं। कुछ भी करके हम अंततः भगवान के ही अधीन हुए, या तो हम उसके प्योर फॉर्म के अधीन हुए, या फिर हम उसकी बनाई हुई माया के, हम सब उसी के ही अधीन चल रहे हैं। Now there is a fact, there is a story related to this. Once Faiz has gone to एम्परर अकबर्स कोर्ट। एक बार फैज़ अकबर के कोर्ट में गए और उनसे कुछ मांगने गए, तो उन्होंने देखा कि अकबर खुद ही भगवान से दुआ कर रहा है कि मुझको अच्छी सेना दो, मुझको जीत दिलाओ और मेरा धन धान इसे पूर्ण करो। बाद में जब अकबर वापस आया अपने दरबार में तो उसने पूछा फैज़ से कि आप क्या चाहते हो। उसने कहा मैंने तो आपको खुद ही मांगते हुए देखा है, अब मैं आपसे क्या मांगूं, मुझे किसी मीडिएटर की, मध्यस्थ या बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। आई विल डायरेक्टली आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड एंड Faiz has returned back. In the similar manner, we, though worshipping God in different forms and material abodes, the celestial bodies, but the person who knows that these things are ephemeral and ultimately not last for moments, then devotes or refuges to Lord. So this fact is disclosed by Lord Krishna over here. How does the mind get purified? Now, how does the mind get purified? By giving up attachment, fear and anger. When we are having attachment, जब किसी चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति होती है तो उसको खोने का भय भी रहता है। And if the things are not getting accomplished, then there is the anger arises. So ultimately it is the attachment which corrupts our mind. So we have to be free from attachment. This is the basic key of spiritualism. Actually, attachment is cause of both fear and anger. Fear arises of apprehension that the object of our attachment, so we may lose it, so that kind of apprehension causes fear. And it is also a fear that it may be snatched from us, so fear is arising either by not getting it, that I may not get it, or if it is with us,
then I may lose it. So there are two kinds of fear. And anger arises when there is an obstruction in attaining the object of our attachment. Attachment is thus the root cause of mind getting dirty. अंततः आसक्ति ही हमारे मस्तिष्क को दूषित करती है. जब हम सांसारिक वस्तुओं पर जो कि क्षण भंगुर हैं उनके प्रति आसक्त हुआ करते हैं, लगाव रखते हैं, झुकाव रखते हैं, तो उसको खोने का भय भी रहता है और उसको न पाने की अवस्था में क्रोध भी आता है. तो आसक्ति ही सभी दुर्गुणों की जननी है और यही हमारे मन को दूषित करती है. यदि हम इन सांसारिक चीज़ों से हटकर भगवान में अपने को लगाते हैं तो वो हम उसकी माया से तर जाते हैं, क्योंकि माया स्वयं भगवान की चेरी है. The world of Maya consists of the three modes of material nature. What is the energy, the form of energy in which the world is proliferating ultimately by the directions of God is Maya only. And the Maya is having three modes, that is Sattva, Rajas and Tamas. So there are three modes of Maya, that is goodness, passion and ignorance. तो जो माया है वो तीन गुणों से स्वयं भी युक्त है, सात्विक, राजस एंड तामस. All objects and personalities in the world come within the realm of three modes. So the person who get attaches to this, जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति रखता है तो वो इन तीन गुणों से युक्त होगा, सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा. तामसिक होगा तो वो उसमें ये बात रहेगी कि किसी प्रकार से दूसरों के दुख में हमें सुखी होना है. एंड इट इज ऑल गुणा गुणेषु वर्तन्ते. दीज डिफरेंट मोड्स और वर्च्यूज इंटरेक्ट one with each other. So the tamasic is how the person is getting happy by destroying somebody or making somebody else unhappy. दूसरे को दुख देने से वो सुख पाता है. राजसिक व्यक्ति इन्हीं सांसारिक वस्तुओं में कितना अधिक से अधिक हम आनंद पा लें, इनसे कितना अधिक से अधिक शारीरिक सुख पा लें, इंद्रियों का सुख पा लें, इसमें प्रवृत्त रहता है. और जबकि सात्विक व्यक्ति इन्हीं सांसारिक वस्तुओं को दान देने की प्रवृत्ति रखता है. बट दीज ऑल थ्री फॉर्म्स आर अटैच्ड टू मटेरियल वर्ल्ड. लेकिन ये तीनों ही तीनों माया से, इस सृष्टि से, इस भौतिक संसार से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने अधिष्ठाता के प्रति पूरी तरीके से सम्यक समर्पण, विशुद्ध समर्पण अभी नहीं किया है. सो दिस माया और द मटेरियल रिंग is attached with three modes of material nature. All objects and personalities in the world come within the realm of these three modes. When we attach our mind to material object, our mind also get affected by three modes. So the person who is free from this world is free from three virtues. Now, when we absorb the same mind in God, which is beyond the three modes, यदि हम ईश्वर के समर्पित होते हैं तो चूंकि माया ईश्वर की ही चेरी है तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं, माया के बादल छट जाते हैं और भगवान हमें अपनी शरण में लेकर ये कृपा कर देते हैं. इसलिए हमको सांसारिक वस्तुओं पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मन को दूषित करता है. Thus the sovereign recipe to clean the mind from the defects of lust, anger, greed, envy and illusion is to detach it from world and attach it to supreme लॉर्ड. तो हमको प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ अपनी दृष्टि चेंज कर देनी है और हमको संसार की ओर से विमुख होकर ईश्वर के उन्मुख हो जाना है. बाकी का काम भगवान भक्ति मार्ग में स्वयं कर देते हैं. हमें भगवान की उपासना करनी है और हम धीरे धीरे इस आसक्ति से भगवान की कृपा से मुक्त होते चले जाएंगे. नाउ here we are seeing in this verse that is Lord partial in bestowing his grace upon those who absorbed in their mind in the worldly things or to him. क्या भगवान पक्षपाती हैं कि वे उन व्यक्तियों पर कम दया करते हैं जो भौतिक वस्तुओं की ओर हैं और उन पर अधिक दया करते हैं जो उनकी ओर उन्मुख हैं?
क्या भगवान इनमें भेद करते हैं और उनके प्रति अधिक कृपा करते हैं कि जो उनके प्रणिपात होते हैं उनके प्रति समर्पण करते हैं? इस श्लोक से तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जो सांसारिक वस्तुओं की तरफ रहते हैं वो तो संसार के गुलाम हैं, और जो मेरी ओर आते हैं तो उनकी मैं रक्षा करता हूँ, योगक्षेम का वहां में हम करता हूँ। ये तो ठीक नहीं है, हम सब तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इस बात को उन्होंने अगले श्लोक में विस्तार से और अच्छे से बता दिया है। नाउ वर्स 4.11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथाम, who in whatever way to me prapadyante, surrender, in whatever manner a person surrenders to me, tans tathaiv bhajamyaham, to that person I reciprocate in similar manner। जो मुझे जिस प्रकार से प्रणिपात होता है, समर्पित होता है, मैं वैसा ही प्रतिफल उसे देता हूं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, to me the person who follows manushya parth sarvasa, ultimately every person follows me। manushya parth, o the son of pratha, o Arjun, everybody is ultimately following to me, nobody is escaping from me। the literal meaning is this, जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उनको वैसा ही प्रतिफल देता हूं। सभी मनुष्य, चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक हों, वे मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। अब इस चीज को देखें कि भगवान कैसे कह रहे हैं कि मेरा अनुसरण करते हैं, आस्तिक भी मेरा अनुसरण करता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से और रोचक विधि से यहाँ बताई गई। सो अकॉर्डिंग to the manner in which they approach me, I favor them in that very manner। O son of Pratha, human beings follow my path in every way। Ultimately, every human being follows me। Lord Krishna states that he reciprocates with everyone as they surrender to him। For those who deny their existence, he meet in the form of law of karma। जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं और उनके काम को नोट करते रहते हैं, और अंत में जैसा वे करते हैं प्रतिफल स्वरूप वो उनको देते हैं। और इस प्रकार से ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं, और इस विधि से हम अंततः भगवान के ही प्रणिपात हो जाते हैं। तो ये भी भगवान की पाठशाला का एक नियम है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। तो करते हैं, गलत करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर दोहराने की प्रक्रिया होती है। सो दोज हु आर एस्थेटिक, जो नास्तिक हैं वे भी भगवान के ही प्रणिपात हैं, भगवान उनके हृदय में भी विराजते हैं और उनको भी आगे बढ़ाते हैं। He meets them in the form of law of karma। He sits inside their heart, notes their actions, dispenses the result, but such atheists too cannot get away from serving him। जो नास्तिक हैं वो भी भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? बिकॉज दे आर अल्टीमेटली सर्विंग टू मैटीरियल रीम। क्योंकि वे यदि भगवान के ओर झुकाव नहीं रखते तो संसार की ओर तो रखते हैं, और संसार तो उनकी ही ऊर्जा का प्रतीक है। तो हम अगर संसार की ओर भी झुकाव रख रहे हैं सांसारिक वस्तुओं पर, तो वो तो भगवान की ही लीला है, उनके ही प्रति झुकाव हुआ। सो दे अल्टीमेटली ऑब्लाइज टू सर्व गॉड्स मटेरियल एनर्जी, एंड टू अटेन दिस दे सरेंडर इन फ्रंट ऑफ सेलेस्टियल एबोर्ड्स। और उसकी प्राप्ति के लिए वे विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं। Now, in its various partitions as wealth, luxury,
रिलेटिव्स प्रेस्टीज, सो वो भगवान वो किसी न किसी प्रकार से माया की ओर झुकाव रखते हैं, या तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए, अपने संबंधी जनों के संपन्नता के लिए, या अपने मान सम्मान के लिए किसी न किसी प्रकार से वे जुड़े रहते हैं। जो कि माया भगवान की चेरी है, वे उसका अनुसरण कर लेते हैं। भगवान के चेले का अनुसरण करना, जैसे हमने बताया कि संत फैज ने अकबर का अनुसरण किया भगवान को छोड़कर, तो हमें मध्यस्थ के लिए नहीं जाना है। ये जो माया है ये मध्यस्थ है, भगवान की चेरी है। हम क्यों न सीधा उस मी लॉर्ड से बात करें, अपने भगवान से बात करें, सीधा उससे संबंध रखें, बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें। So, as the goal and refuge, he takes care of them just as mother takes care of his child. So, on the other hand, who surrenders to God, तो जैसे बच्चा भगवान से या माँ से कुछ मांगे खिलौना और माँ कहे गोद में ले ले, तो बच्चे को भी पसंद नहीं आएगा। तो जो जैसे मुझे भसता है मैं उसे वैसे ही भसता हूँ। अंततः बच्चा खिलौना छोड़ देगा और उसकी माँ के प्रति शाश्वत भक्ति हो जाती है कि यही मुझे सब कुछ देने वाली है। बच्चे को विश्वास हो जाता है। खिलौने के प्रति तो उसकी आसक्ति जाती रहती है, लेकिन माँ उसके लिए सबसे प्यारी हो जाती है। वैसे ही भगवान हमारी जैसी स्थिति है उसका सम्मान करते हुए, हमारी कर्म के प्रति स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, हम जिस चीज़ के प्रति झुकाव रखते हैं अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार, भगवान वो ही हमें देते हैं। और अंततः हम जब ये जान जाते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा कि ये सब संसार क्षण भंगुर है, क्यों ना हम उस शाश्वत प्रभु के ही चरणों में विराजें, क्योंकि हम उसके अंश हैं। धीरे धीरे हमारी आत्मा के पवित्र हो जाने पर, क्योंकि हम भगवान से माया के द्वारा जुड़े हुए हैं, यदि हम माया के से जुड़े हैं तो भी उसको प्राप्त करने के लिए उस प्रभु के प्रणिपात होते हैं, उनके बनाए हुए देवी देवताओं के प्रणिपात होते हैं। तो भगवान कृपा करके धीरे धीरे, रास्ता ये जरूर धीमा है और लंबा है, लेकिन फिर भी ये भगवान की ओर ही जाता है। सो दोज हु surrenders directly to God ultimately take refuge at the feet of God, so God takes care of them as child. वैसे लोग जो भगवान के सीधा प्रणिपात होते हैं, भगवान उन्हें बच्चों की तरह संभालते हैं और उनको इस माया से दूर रखते हैं। श्री कृष्ण यूजेस द वर्ड भजामि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, to them I serve in the similar manner. by ये मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम है तो बीच में बंद हो जाएगा, तो फिर वहीं इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। Now Shri Krishna uses the word bhajami. So here he serves the surrendered soul by destroying their accumulated karmas of endless lifetimes. Those who surrenders at the feet of God, God ultimately subsidize all the traces of karma. भगवान उनके कर्मों को, संस्कार को भी मिटा देते हैं। जो भगवान के प्रणिपात रहते हैं, फिर उनके कर्मों के संस्कार भी शेष नहीं रह जाते, उन्हें बार बार कर्म बंधन से भी मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान परम करुणामयी है। कटिंग द बॉन्ड्स ऑफ माया, क्योंकि अब माया ही नहीं रह जाती, वो अपने बिचौलिए को छोड़कर भगवान की शरण आ जाता है। सो द डार्कनेस ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस एंड बेस्टोइंग डिवाइन ब्लिस, भगवान उसको इस मेटीरियल एग्जिस्टेंस, ये सांसारिक अस्तित्व से मुक्त करते हुए उसको डिवाइन ब्लिस, दैवीय वरदान प्रदान करते हैं। डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन लव, एंड व्हेन द डिवोटी लर्न्स टू लव गॉड सेल्फलेसली, ही विलिंगली enslaves him to their love, and ultimately he willingly enslaves. So God embraces that selflessly. So God embraces, and the devotees also willingly surrender to him. जब भगवान हमें इतना embrace कर रहा है, पग पग अपनी ओर ले जा रहा है, तो हम ऐसे भगवान की आराधना क्यों न करें। So let me recite. और कोई भजन बोलने वाला है मौसी? तुम्हारी आज्ञा हो तो हम बोल दें। हाँ आप बोल दीजिए, क्योंकि हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। आप बोल दीजिए। चलिए, पहले तो आपका धन्यवाद
बहुत सुंदर तरीके से। और ये हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि भगवान ने ऐसा कहा कि भाई जो मेरी शरण आता है उसकी मैं देख रेख करता हूँ, लेकिन देखो इस श्लोक में आगे बता दिया कि जो नहीं आता शरण उसकी भी देख रेख करते हैं, हाँ लेकिन दूरी हो जाती है, हाँ बीच में जो बिचौलिया का काम हो जाता है, बस फर्क इतना पड़ता है। हाँ। बहुत सुंदर, एक एक शब्द इतना स्पष्ट तरीके से समझा देते हो तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आशीर्वाद। और लिंक की गड़बड़ी है क्या है, हमारे और साधक भाई बहन जुड़ नहीं पा रहे हैं, और आज मुझसे भी गलती हो गई कि मैं सुबह दिमाग से उतर गया कि मैसेज डालना है, कल डाला नहीं। और बाकी बहुत लोग इच्छुक बैठे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, मम्मी भी क्या इच्छुक कारण बैठी है? थी लेकिन जुड़ नहीं पाई। हाँ, बहुत लोग बैठे हैं ऐसे कि इच्छुक है, जुड़ नहीं पाए हैं। हम्म। तो चलिए मैं भजन बोल देती हूँ, छोटा सा। श्री राम। ले चलो कल्याण मग में देव तुम पथ रम्य से, सब साधनों के बोध से संपन्न हो तुम हे हरि। दूर कर दो वक्रता